Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my channel MathX World. Students, today we will learn about multiplication of integers. Students, you are all already know that there are also positive integers and negative integers, which means positive integers include numbers like this +1, +2, +3 which have plus sign and up to so on. And negative integers include -1, -2, -3, um, -4, so on, which have a negative sign. So there are both type of numbers, positive and negative, in integers. So here we will learn about the multiplication of these type of numbers of integers, means numbers which include both type of signs. So here are four important points for multiplication of, or important sign conventions for multiplication of integers. If the both numbers are positive or plus, then the product is also plus sign. If one integer is positive and other is negative, then their product will have a negative sign. If one is negative and other is positive, then the product also has negative sign. If both are negative integers, then the product have a plus sign. So these are four sign conventions. If both are positive integers, plus plus is equal to plus. If both are negative, minus minus is equal to plus. If one is uh, positive and other is negative, then the product is have a negative sign. If one is negative and the other is positive, then the product also have a negative sign. So these are four basic sign conventions, you can say, are considerations while multiplying integers. So let's take an example. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है 16 इंटू -2. सो here is also a positive number and also a negative number. First we will multiply digits. 16 into 2 is equal to 32. नाउ आई विल टेल यू कि ये जो साइन कन्वेंशन है ये क्यों ज़रूरी है. देखिए, अब हमने डिजिट्स को तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है 16 इंटू 32. अब हमने कोई साइन भी साथ लगाना है, साइन कन्वेंशन चेक करनी है. देखिए, पहले वाला जो इंटीजर था उसके साथ नंबर था, उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसके साथ माइनस साइन है. तो अब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी हुई है, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या था, माइनस. तो इस नंबर के साथ क्या आएगा, माइनस. तो 16 इंटू -2 इज इक्वल टू -32. नाउ यू गेट द पॉइंट वाई these sign conventions are necessary. Let's take another question. -6 into -5. First we will multiply digits. 6 into 5 is equal to 30. Now consider the signs. -6 -5 both are integers are negative. Minus into minus is equal to प्लस. हमने वी हैव डिड दैट कि माइनस इंटू माइनस अब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस. तो -6 इंटू -5 इज इक्वल टू +30. और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन अ प्लस, बिकॉज अगर कोई भी नंबर इस तरह लिखा हो तो उसके साथ भी इट इज़ कंसीडर पॉजिटिव. सो इट इज़ -6 इंटू -5 इज इक्वल टू 30. अब इनके साथ माइनस नहीं आएगा. गॉट इट. नाउ टेक अनदर क्वेश्चन. 7 इंटू -4. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द नंबर्स. 7 4 are 28. Now consider the signs. This digit number does not have any sign, so it is a positive integer. This is a negative. Plus minus is equal to minus. So 7 into -4 is equal to -28. Got the point? Next is -6 into 4. First we will multiply the numbers. 6 4s are 24. Now consider the signs. This is a negative integer. This does not have any sign, so this is a positive integer. Minus plus is equal to, we have read that, minus. So -6 into 24 4 is equal to -24. Students, now you get the point कि अगर ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. क्या आएगा, पॉजिटिव, +30. अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो तब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तब भी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा.
एंड दोनों अगर पॉजिटिव हुए तो तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास है 3 into 5, अब इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 3 15 प्लस 50। Got it? So these are some basic tricks and techniques to multiply integers, and we have also considered these sign conventions while multiplying integers. Okay, if both integers are positive, then the product is positive. If both integers are negative, then the product is also positive. If one is positive and the other is negative, product is negative. If one is negative and the other integer is positive, the product is negative. So hopefully students you get the point. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you.